सो बेसिकली आज हम बात करेंगे ब्लड टाइप्स के बारे में। सो आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का ब्लड ए ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है। ओके, ये सब आपने देखा होगा। सो ये सब चीज़ें क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप, ओके, इन डिटेल। आवर ब्लड टाइप्स आर जेनेटिक, that is we inherit genes from our parents that determine our own types. There are many red blood cells, factors, or types. We will discuss the two most important ones, that is ABO group and the RH factor. So basically, whatever blood group we will got, it is from the parents. It is inheritary. It is genetic. So there are two types of blood group. One is ABO group, and another one is RH factor. सो बेसिकली जो भी हमें ब्लड ग्रुप बताया जाता है, जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है, वो ब्लड ग्रुप हमें हमारे खानदान से मिलता है, फैमिली से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, तो ये एक कहाँ से आया, ये तो पता चल गया। और कितने टाइप्स का ब्लड ग्रुप्स है हमारे बॉडी में, ABO एंड RH फैक्टर। सो हमारे पास कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स है, ABO और RH फैक्टर। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं पहले ABO ग्रुप। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ABO ग्रुप। द ABO ग्रुप कंटेन्स फोर ब्लड टाइप्स। So this is the one group, and another group is RH factor. ABO group contains four types of bloods: A, B, AB, and O. Okay, so basically in ABO group we have four types of blood groups: A, B, AB, and O. Okay, so the letters A and B represent antigen, protein oligosaccharides on the red blood cell membrane. A person with A blood has the A antigen on the RBC, and someone with type B blood has the B antigen. Type AB means that both A and B antigens are present, and O means that neither the A nor the B antigen is present. So basically, here concept is blood group means antigen. Blood group means antigen. So whenever you will listen the word blood group, A blood group, B blood group, means that patient have that specific type of antigen on our blood RBC। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए अब ब्लड ग्रुप कैसा मालूम करेंगे, कहाँ से मालूम करें, कहाँ से आया, ये पता चल गया। लेकिन कहाँ पे होगा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप होगा आपके आरबीसी में। आरबीसी से मालूम होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्योंकि आरबीसी का जो सरफेस है, उसका जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उसका सरफेस, उसके ऊपरी सतह पर, उसके सरफेस पर आपको एंटीजन मिलेगा। ठीक है, या तो ए होगा, या बी एंटीजन होगा, या ए बी होगा, या कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ए ग्रुप वालों में ए एंटीजन होगा, बी ग्रुप में बी एंटीजन होगा, ए बी ग्रुप में ए बी एंटीजन होगा, ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ओके, एंटीजन, व्हाट इज meant by antigen? First we have to understood this concept. Basically, whenever our body, we have two types of function. Okay, internal and external. Internal, it will have different types of functions that will divided in different things. External, it have to be protected, it have to be protection. Always the body will in protection mode by entering the antibodies, sorry, any infectious substance.
Okay. So basically, whatever things, okay, whatever things come from the outside, we have to protect that things from the body. So our body have one thing, that is immune system. What we have? Okay. So basically, our body will protected by our immune system. So whatever outside invader is entering to the body, that is nothing but antigen. Okay. So our body will produce antibody. Okay. So basically, this is antigen. Okay. So RBC, when RBC developed, so it have A antigen, it may be B antigen. It's come from the outside. Okay. So it comes from the outside, it is settled on the RBC. So based upon that, will body produce antibodies. Okay. You will confuse, but you have to understood. You will understood very easily to if you concentrate. So basically, A antigen is coming from the outside and settling on the RBC. B antigen is coming from the outside and settling on the RBC. AB, that's same, and nothing antigen is settling on the RBC. So on that protection mode, our body will produce antibodies against that antigen. Okay, against that already it is invited. Already it is uh sorry. Already it is acceptable by our body. So that's the reason it will not have that type of antibody. Okay, because that antigen is produced by our own body cells. So that's the reason we doesn't have the same antibody. We have different antibodies. So if a person have A blood group, means A antigen, he will have or she will have B antibody. Okay, understood. If a person have B antigen or B blood group, the person will have A antigen, A antibody, sorry. The person who have AB antibody, okay, they doesn't have antibody. Okay, if a person doesn't have A or B, the person have A and B antibodies. This is the thing we have to remember. Very, very important. Okay, so here we have the image. Okay, you can see if a person have A, B, AB, or O. These are the types of blood groups in ABO group. So he have A antigen, B antigen, both A and B antigen, not A or not B. So he have A antigen. Opposite of A is B. Opposite of B, A. He have both. That's the reason no antibody is there. He doesn't have both. That's the reason he have antibody A and B. Okay. So that's the reason antibodies will kill antigen. Whatever outside invaders are nothing but antigens. Okay. So if you are giving A antigen, so already B antibody is there. So that's the reason nothing reaction will happen. If you give B antigen, so antibody B is present. So antibody B present is, if you have B, then it will attack on the B. So that is nothing but antibody B. Okay. If you have B antigen, if you're already giving B blood group, nothing will happen because you have antibody A. Okay. So if you give A antigen, A blood group, so it will ready to attack on the A. Anti-A, anti-B. Okay. So you can see here red blood cells. Red blood cells have antigen.
These are the antigen on the surface. These are the antibodies. A antigen have B antibodies, anti-A serum, anti-B serum. Okay. So this is the reason. If you give A will nothing will happen. If you give B, then RBCs are killed. Okay, they are lost. If you have B, you give B, nothing will happen. If you give uh, opposite to that, what will happen? It will attack. So these are the like images. So O can give anyone the blood because he doesn't have antigen. So no one will attack him, but O cannot receive from anyone. But AB can receive from anyone because he have both A and B. So he doesn't have antibodies. So nothing will attack on the recipient. So he can receive from anyone. AB. O can give anyone. Okay. So type A can receive only from A. Type O, type B can receive from only type B. Okay. So basically, these are the things which are explained in this uh, blood types. ओके सो अगेन आई विल रिपीट इन हिंदी सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं एक है ए बी ओ ग्रुप और एक है आर ए ग्रुप आर एच ग्रुप तो ए बी ओ ग्रुप जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स है ए बी ए बी एंड ओ सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा हमें हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी फंक्शन क्या है कि जो बाहर से आने वाला जो भी चीज हो वो बॉडी को बचाने के लिए उसको अटैक करे ठीक है अब हमारे बॉडी डिफरेंट ओरिजिन से या फिर डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट लोकेलिटी में रहकर हमारी एक बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है डिफरेंट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ओके सो उस वजह से उसमें ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से आएगा और साथों साथ एनवायरनमेंट से भी आएगा तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप ये हमें फैमिली से भी मिल सकता है और एनवायरनमेंट से भी मिलेगा तो इसी तरह हमारे ब्लड ग्रुप में ए बी और ए बी और ओ होता है अब समझने वाली बात यह है कि अगर ए एंटीजन होगा तो हमारे बॉडी में ऑपोजिट में बी एंटीबॉडी होगी बी एंटीजन होगा एंटीजन का मतलब बी ब्लड ग्रुप ए एंटीजन का मतलब ए ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन का मतलब ए बी ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन का मतलब ओ ग्रुप सो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप ए एंटीजन अगर होता तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा ए और बी अगर एंटीजन होगा तो ए बी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों हो गए ठीक है बुथ एंटी ए एंड एंटी बी सो वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है ए भी किसी से भी ले सकता है ठीक है तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है ठीक है अब हम तो ये चीजें ध्यान में रखिए बस ब्लड ग्रुप देने से पहले क्रॉस मैच किया जाता है ठीक है क्रॉस मैच करके देखा जाता है लैब में कि ये ब्लड जो दिया गया है वो दोनों क्लॉट तो नहीं हो रहे ब्लड ग्रुप सही तो नहीं है तो ये देखने को मिलता है नेक्स्ट इज आर ए फैक्टर इन नथिंग बट ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव आर एच फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा आर एच फैक्टर नेगेटिव होगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाएगा तो ये ब्लड ग्रुप के बारे में है तो बेसिक जानकारी हमें मिली है और डिटेल में हम लोग बहुत सारे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे ठीक है सो इफ एनी डाउट यू कैन
asked till now?